चलो चलो थोड़ा सा ओके जैकलिन एशिया स्पा के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस शाम को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आपकी शाम को? Well, I have always been a huge supporter of Asia Spa India, and being a spa lover myself, I'll always support and encourage these awards. And I was an attendee 2 years ago, so it's good to be back. क्योंकि स्पा की बात हो रही तो फिटनेस ब्यूटीफुल ये सब आप कितना बिलीव करती हैं, सबसे ज़्यादा किसमें बिलीव करती हैं? एक्जैक्टली ब्यूटीफुल फिटनेस But being fit is beautiful. I mean, like that's anyone who has energy and who has positivity. Actually, वही actually beauty है. So yeah, I think that you sometimes need to be able to pamper yourself. You sometimes need to take care of yourself, and it's a very very important thing to do to enhance your lifestyle. And what are you expecting to like inside? What are you expecting? What am I expecting? A fun evening. Thank you. Jackie, what's going on in the professional front? Judua 2, how's the shooting and everything? I'm very excited for Judua too. Me and Varun have been meeting the whole of this week, and we've just been discussing our songs with David sir, and how we're gonna make it different, how we're gonna make it fun and enjoyable, and this is my second film with him, so we're really looking forward to working together. Thank you. Sir, ma'am, please go. Sir, sir. Excuse me. Ma'am, here. Sir. Ma'am, here, just sit there. Congratulations, Jacqueline. We are not going to let you go without telling us what this joie de vivre inside you is all about and how we can get a part of it. First of all, thank you so much for recognizing that. I think it's such a cool tag to have, charismatic, because I'll tell you something, it's not something that I can come with easily. A lot of people keep asking me or keep telling me, like, you're smiling all the time, you're positive all the time, but what I think they don't realize is I actually work hard at it. And like everyone else, you have your bad days, your stress, you have work tension and stuff, but this is actually something, like the way you would train your body at the gym, this is also something that's really important about training your mind. And I was just watching Rekha Ji and I was just in awe, but she was telling me right before she come on stage that she meditates all the time, and that is something that's really, really important. And I think that adds a lot of value to your personality, and that is something that I'm trying to invite. But yeah, work on your positivity, and it really pays off. So thank you so much for try that. Thank you, Jacqueline, for coming up to receive this award. Ladies and gentlemen, let's hear it for the charismatic personality of the year. Thank you, and thank you, Parinita. हाय हेलो कैसे हो? जियो स्पाइन एशिया अवार्ड के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट होकर आपका भी चाहिए और आपकी फील करके आपकी शिकायत भाई जोर से बोलो ना थोड़ा प्लीज़। जियो स्पाइन एशिया स्पा के अवार्ड के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप ही यहाँ पे क्या फील करते हो, क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, इट्स माय फर्स्ट टाइम हियर, पहली बार आया हूँ और इट्स आई मीन अतिया आई थी लास्ट टाइम, आई थिंक अतिया वन लास्ट टाइम, शी गॉट द बेस्ट न्यू स्टाइलिश गर्ल, सो आई एम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम यार, एंड और क्या बोलूँ भाई। क्योंकि स्पा की बात हो रही है तो स्टाइलिश फिटनेस हैंडसम सबसे ज़्यादा किसमें बिलीव करते हैं सूरज? सबसे ज़्यादा फिटनेस में, आई थिंक फिट फॉर मी स्टाइल इज़ फिटनेस. I don't think if I didn't feel fit enough, I don't think I would feel stylish.
So that is my fun. नहीं, I start on the 5th or 6th of the coming next month. I can't talk about it right now. मतलब थ्रिलर देखेंगे या रोमांस करते हैं, क्या करते हो आपको देखेंगे ऐसा कुछ अगर Action romantic kind of. Thank you. How are you? ठीक, long time. जियो स्पाई एशिया स्पा के अवार्ड के मौके पर हम सभी वहाँ पर प्रेजेंट हैं। आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं और क्या कहना चाहते हैं? मतलब मैं अभी आई हूँ अंदर, तो I'm excited to see how it's going to pan out today. But let me go in and when I come out I'll tell you. अदिति बहुत खूबसूरत लग रही है। Thank you. किसकी ड्रेस पहनी हुई है, के टायर के बारे में कुछ बताना चाहिए? I'm wearing Amit Agarwal, so he makes a lot of his clothes out of like waste material. So I think that's really amazing, given that I would like to be more environmentally conscious, and I'm really happy that he's doing such amazing work. And jewelry by Bengali. अदिति, लड़कियाँ हमेशा अपने आप को पैम्पर करने के लिए स्पा वगैरह जाती हैं। अदिति कितना स्पा वगैरह में बिलीव करती है? मैं actually I would love to go to a spa more. मैं इतना जा नहीं पाती, लेकिन I'm a massage junkie, तो जितना I can get a deep tissue massage में उतना I get. Bhumi is going amazing. It's been very intense. It's a difficult film, but it's also it's been an amazing experience working with Umang sir, working with Sanjay sir. That has been like super amazing. It's a really great team, and it's been tough work, but it's been amazing. एक शेड्यूल खत्म हुआ है, थोड़ा सा और था। नहीं लगी थी, but he is a real hero because he got hurt and the next minute he was up and he was finishing the scene. We were shooting an action scene, but he's really amazing and he shoots a complete action scene like in one take. So I was just like looking at him like, how do you do it? He's really amazing. The Taj is beautiful. What can I say about the Taj? Everybody knows how beautiful it is. So it was really amazing being there. Yeah. What do you want me to say? Hi. Hi. एशिया स्पा के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। आप बताइए आज की शाम को क्या एक्साइटेड हो, क्या कहना चाहिए आज की शाम के बारे में? Well, मुझे लग रहा है एशिया स्पा नाइट है। स्पा नाइट सुनते ही फुट मसाज की याद आ जाती है। सो आई लव दैट पार्ट ऑफ इट. सो आई थिंक ऑल women love the spa part of it. But it's awards and I wonder what's going to happen. So I'm very excited to see what is going to happen. अगर मैं फिटनेस एंड ब्यूटी इन सारी चीज़ों की बात करूँ तो फिटनेस ब्यूटी एक्सरसाइज हेल्थ पे और फिट रहने पे आई थिंक रादर देन थिन आई वुड रादर बी फिट. सो कोशिश तो जारी है, मुश्किल है थोड़ा, लेकिन ट्राई कर रही हूँ. आई एम वेयरिंग अ रिद्धि मेरा और फन सा आउटफिट था और मज़ा आ गया पहन के. सो आई रियली लाइक इट. आई होप यू लाइक इट.
मेरा फोटो ले रहे हो, तुम्हारे फोटो का लेंगे ये छप वो खंदा का Super, how are you? तो सना जी सबसे पहले तो जानना चाहिए जियो स्पा एंड एसी स्पा के मौके पर हम सभी एप्लीकेशन आप बताइए आप कितनी एक्साइटेड हो, क्या कहना चाहेंगे आपकी? I think obviously excited हूँ. It's about Jio Spa and also we all love it. I think कहीं ना कहीं हर किसी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है. So definitely I'm here to see what's happening, how is the function going to go, and as of course like how we all enjoy red carpets and events that keeps happening and we meet a lot of people. So I think that's also one part of it. और कितनी स्टाइलिश के बारे में बात की, कितनी स्टाइलिश है आप? I think मैं दिख रही हूँ, मैं कितनी स्टाइलिश हूँ, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा दिखाने के लिए कुछ हो सकता है. बट या आई थिंक स्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स योर ओन आइडेंटिटी. दैट्स इट. थैंक यू. ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया में और आई थिंक लाइक ऑल दैट यू नो स्पा बहुत ज़्यादा रिजॉर्ट्स आ गए इंडिया में, हेल्थ स्पाज आ गए, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन हैव बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स द इंडस्ट्री हैज़ रिजन सो मच. सो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि जो स्पाज में बेस्ट है वी ऑनर देम एंड या एंड देयर अचीवमेंट्स. क्योंकि स्पा की ये बात हो रही तो अगर मैं स्टाइलिश की अगर बात करूँ तो यू एंड भूषण जी में सबसे ज़्यादा स्टाइलिश और वो तो नहीं है, तो आप बताइए. वो नहीं, आई थिंक मे बी मैं ही हूँ दोनों में स्टाइलिश. फिटनेस एंड फैशनेबल में सबसे ज़्यादा में क्या इम्पोर्टेंट रखती है आपके लिए, क्या इम्पोर्टेंट? आई थिंक बोथ. आई थिंक फिटनेस एंड फैशन को हैंड इन हैंड. अगर आप फिट हैं तो जो भी आप कपड़े पहनते हैं वो पहनने में भी आपको मज़ा आएगा, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे. सो किसी भी फॉर्म ऑफ फिटनेस हो, चाहे वो किक बॉक्सिंग हो और योगा हो और सिंपल एक्सरसाइजिंग लाइक क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, यू नो कुछ ना कुछ फिटनेस लाइफ में हमेशा होनी चाहिए एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विमेन ऑल्सो. थैंक यू.
बहुत ही एक्साइटेड हूँ एंड अंदर जाके मेरा पहली बार मैं यहाँ आई हूँ एंड अंदर जाके मालूम चलेगा कि क्या होता है। लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल इवनिंग। बहुत सारे लोग मेरे काफ़ी फ्रेंड्स मुझे मिले जो यहाँ आए हैं एंड सो एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वंडरफुल इवनिंग। इस बार की बात हो रही तो मैं आपसे जानना चाहूँगा फैशनेबल एंड स्टाइलिश एंड फिट इन सारी चीज़ों में सबसे किस में बिलीव करती है कनिका जी? मैं एक्चुअली पर्सनली काफ़ी स्पाज में जाती हूँ, डिटॉक्सेस के लिए जाती हूँ बिकॉज हमको एक इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद एक कंप्लीट शटडाउन चाहिए होता है। सो आई लव स्पाज एंड आई थिंक सिर्फ जो काम करते हैं उनको ही नहीं, हर इंसान को स्पा के लिए जाना चाहिए बिकॉज एक माइंड एंड बॉडी शटडाउन है। द गाउन इज बाय रोलैंड मुरे, इट्स ब्रिटिश डिज़ाइनर। आपका फेवरेट कौन सा है? उसमें से तो कैसे बता सकती हूँ? It's that's a secret, but there's lots actually now coming. So. नाइन्थ पे एक जल्दी Traffic is sir. Okay. Ekta ji white. थोड़ा इस तरह मैम क्या बोलूं? So एकता जी कॉन्ग्रेचुलेशन जिसके बारे में जानना चाहेंगे आप? सी बहुत वेलनेस और ब्यूटी का अवार्ड मिला है एज पट फॉर पावर। सो आई होप आई कैन रिस्पेक्ट इट एंड डू बेटर वर्क। और मैं तहे दिल से इनको थैंक यू कहना चाहूँगी बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी हैप्पी फीलिंग। थैंक यू सो मच। एकता आपके जो सीरियल्स हैं उनके सेट पे मीडिया बैन है, इसकी खास वजह कुछ? आई जस्ट न्यू इट, दिस विल बी द क्वेश्चन। एक मेरी कुछ स्टोरीज थी शो की जो बहुत लीक हो रही थी,
तो कुछ टाइम के लिए ही किया है, bear with us. लोग वेट करेंगे कब मौका मिलेगा फिर जाने का? हम कोशिश करेंगे जल्दी. We can't possibly have you here and not have you tell us about what is it that you must have found a secret that none of us are able to know about that makes you look and be the way you are. I mean, completely zen, and you just look the same over the decades that I have seen you growing up. And if any of us can be half as as good about the body that we live in, then I think we'll all be blessed. So please do tell us at least 2% of what makes you so everything perfect. Namaskar, good evening ladies and gentlemen. Thank you Mimi for those kind words. You're not so bad yourself, you know. I'm not even. And I also know that you sing, so how about me putting you on a spot and saying completely a couple of lines, no? Used to. A perfect 10, I don't know what that is. For me, when I say 10, it's my birthday, 10th of October, and October is also the 10th month. And I'm born in 1954, which again sounds good, and I'm not a number person at all. I don't believe in numbers. So 3 10s make it what? Dun dun dun. I'm just kidding. No, but there are so many people in this audience whom I love. I've grown up with Zareen for one. I grew up in her household. She's mothered me with love and attention and food and nilus and laru, and that's also one of the reasons. Yes, absolutely. It's beyond family. I believe there are more than one soulmates, and I think everybody I connect with, they are my soulmates. So, उसके हिसाब से देखा जाए तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात मेरी soulmates हैं. I'm just here, connected to them through my love, through my work, and mostly through what I believe that I'm able to give in the times to come. So thank you, all you next generations who are a huge inspiration to me. I said this before and I'm saying it again and again and again. You are my true gurus. I have learned a lot from great people. I've learned a lot from my mother, I've learned a lot from Minapa, from Nargisapa, from Madhu Auntie, I'm calling them on first name basis and aunties and appas because that's what they were to me and they are to me. But need I say more about today's generation? Don't even know where to begin. They are coming from somewhere else and I'm going, I don't know where, but they have taught me a lot already, and I said this just yesterday, and I'm saying this again today, that someday, very soon, I've learned so much that I want to give them the Guru Dakshina in some which way or the other, through a performance, through the next creation of mine. That will be my Guru Dakshina to today's generation. So thank you so much. Thank you, Radhika. Thank you, Asia Spa. Thank you for letting me be one of the family members. Thank you so much for this. Thank you. Rekha ji, perfect and never looked this good before. Congratulations again. Divya, thank you for being on stage. You look beautiful. Thank you, Bhushan. Ladies and gentlemen, the one and only Rekha ji. Tell us what makes you so spalicious. How much time do you actually get to spend at the spa?
spa to look this pretty? Good evening, everybody. Minnie, first of all, thank you so much for saying such wonderful, wonderful, wonderful It's all true. things. But very rarely have people acknowledged those things or even understood that. So, Minnie, you know, you're truly special because Special you find that. recognizes Yes, special. thank you so much. Another special person here is Aarti. I started my career with Aarti and Kailash. Absolutely raw, completely new, clueless about everything, and they've always been special. They took me in, treated me like family. They still are family and will always be family. And today I get this award from Aarti. That's very, very special. Minnie asked me a question, how long does it take in the spa? I'm a massage junkie, I love massages, but I don't know if that helps about in anything else other than the fact that, you know, it relieves my tired legs. I'm running around so much the whole day that I love a foot massage, and I'm a complete foot massage junkie. So just for that, I love the fact that I'm here. Do you think free foot massage comes in with this award? Should be. Promise? Oh, I love it. I love this award more and more. I love it. See, there's a reason you are the Spalicious mom. So she needs to be treated. So she can continue to be a Thank you Spalicious so much. It's always lovely to be treated well. Thank you so much. Thank you, gorgeous Sonali. And Asia Spa Awards, thank you so much for this. Thank you. Good night. Huge round of applause for Sonali, and thank you so much, Aarti.